Hello, everyone. Welcome to the Authorhood Podcast. Hope things are being really beautiful at everyone's end. Gracing our show today is Mr. Amit D'Souza, who's a singer, an IT professional, and a beautiful writer at heart. His books, An Evening Full of Glowworms and Handful, are absolute must reads, showcasing his diligent yet sensitive writing style. With simplicity and power, he masterfully conveys deep thoughts, leaving readers in awe of his perspective. His ability to blend emotion and intellect makes his work both impactful and commendable. Hello, sir. Thank you very much for accepting our invite. Welcome. Thank you, Ashita. You actually confused me. Diligent writing style. ये मैं हूँ. अच्छा ठीक है. No, this is something that comes in when one reads. बहुत simple और बहुत अच्छा है. Thank you. Yeah. Okay, so this was a little introduction from my end. How will you best introduce yourself to the listeners? Very simple. I am a storyteller that sometimes gets published. ये overly simple हो गया, हाँ? अब यही तो सच है. आई एम अ स्टोरी टेलर. आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर. मैं जो बुक्स लिखता हूँ या फिर मैं जो गाने भी लिखता हूँ उसमें एक कहानी ही होती है. Wow. I guess मेरा पहला question आपने यहीं से मेरे को दे दिया. What do you think is more simple, writing a story like a story or story through lyrics? Writing a story in story format in a book, it's much more simpler Hmm. because you have space. आपके पास space है. I mean, if you are describing a setting, Hmm. you're very restricted in a song, Hmm. which is again, it's a good challenge to have, because if you want to really master your writing and if you want to improve your vocabulary, Hmm. try करना चाहिए गाने लिखना, because that really expands your vocabulary. Hmm. One very good shot at the vocabulary thing क्योंकि वाकई में restrictions जब होते हैं तो शायद vocabulary और अच्छे से explore करने को मिल जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. अब मेरी अपनी vocabulary जो 20 साल पहले थी वो आज Hmm. वैसी नहीं है. जो मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे 20 साल पहले वो मैं पढ़ता हूँ तो मैं हंस देता हूँ, ये मैंने लिखा था. Okay. So first things first, the title An Evening Full of Glowworms. Now it has a poetic and almost ethereal feel to it. Is there a story behind? Yeah, there's a place called Waitomo in New Zealand, Okay. and ये जगह it is famous for the glowworm caves. उसमें क्या होता है, there is a boat, a boatman takes you in a boat with Hmm. a very small motor जिसकी आवाज नहीं आती है, Hmm. and takes you into the cave. और जब आप जाते हो तो you have to lie flat on your back. और अच्छा. जब वो बोट केव के अंदर जाती है, it's Hmm. complete silence and it's completely dark, black, कुछ नहीं Hmm. दिखता. और केव के अंदर जाते ही तो बोटमैन विल जस्ट क्लैप लाउडली, और अचानक वो आवाज से ना सारे के सारे जो ग्लोवर्म्स हैं वो केव की छत पे लाइट अप हो जाते हैं. Wow. एंड दैट इज ऑल आई विल से अबाउट इट. यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. तो दैट idea, that visual scene, it just stuck with me, and I was like, हाँ ठीक है, this is something that we can play with in terms of stories. And every glowworm is actually a window. एक अलग glowworm, एक अलग life, एक अलग story है उसकी. True. That is the concept of Evening Full of Glowworms. Beautiful. Now, being an IT professional for whom logic and precision are the keys, how do you switch gears into the fluid and emotional world of storytelling? Actually, they complement each other. Because of the logic and the precision, the Hmm. story is always on point. Wow. Even in my organization, Hmm. I write. मैं अच्छा. किताबें लिखता हूँ अपने ऑफिस के लिए. अच्छा.
So that is one of the lucky perks of being creative and all that. मेरी organization मुझे कह देती है कि हाँ भाई तुम लिखो, तुम अच्छा लिखते हो. I'm like ठीक है, कर लेते हैं. जो काम में मजा आता है वही काम करने मिल रहा है. So that way I'm lucky. And yes, the logic flow and the precision and the data flow diagrams, the flow charts, they actually complement the creative side. क्योंकि आइडिया हो जाती है, it's an idea, it's a thought हम्म. that comes into your head. जी. How does a thought flow and how do you get it to a conclusion? हम्म. अच्छा efficient conclusion. उसके लिए मेरी आईटी की एक्सपीरियंस काम में आ जाती है. लाइक आम के आम गुठलियों के दाम टाइप्स. हाँ हाँ, बिल्कुल. बहुत सही. आम, गुठलियां, आम का बगीचा, पेड़, सब कुछ, सबके सब नाम. कुछ. बहुत सही. Okay, the next thing I was about to ask was, did these two ever clash? But I already have the response from you. They're actually complementing. There is no clash. ऐसा तो नहीं है that there has never been a clash. There is the clashes will always come in where there is a creative thought flow and there is a logical thought flow Hmm. running parallel to each other. There is always going to be a clash. That depends on what you want or what you want to take forward. Okay. So your writing, it is firmly rooted in feminism. What's that one aspect of feminism, according to you, that people still misunderstand? Okay. But quite honestly, feminism is very easy to understand. It is equality of rights in every aspect. Hmm. But people fail to look at the larger truth. मेरे हिसाब से, if everyone agrees to feminism and the application of feminism and application of equality of rights and all of that, the Hmm. men will be very lucky. We will be very lucky if the women settle for feminism, क्योंकि वो तो raw deal है मेरे हिसाब से. जी. In all the holy books and all of that, Hmm. ये लिखा जाता है कि God created the world and the Hmm. universe and all of that. Hmm. ये आप मानते हो? ये बिल्कुल सही है. God created the world. Now the Bible, for example, now because you know I'm Roman Catholic, so I've Hmm. read the Bible first, and Hmm. then I have read the other books. So in the Bible, it is written God created man, and then He created woman. ये सही है, but nobody really tells you the reason. God created man. He's a genius engineer, created the man and all of that. Hmm. Then he looked at the finished product and he said, "Crap, ये मेरे से क्या गड़बड़ हो गई?" And then he created the woman. So Hmm. if the women settle for feminism, we'll be very lucky. They are the superior species. Very, very, very rightly put, very rightly said. आप जब बता रहे थे तभी मेरे दिमाग में आया that I'll also ask you, what are your thoughts around pseudo feminism? Because female clan, जिसे जिसके लिए फेमिनिज्म है, जिसके लिए सारी लड़ाई है, even they are not able to understand what actually feminism is all about. It all comes down to just, reading, learning, educating yourself. It cannot happen, with एक दो किताबें पढ़ के. Hmm. You cannot really get to that level of proper knowledge and feminism. देखो, information is available everywhere. Hmm. जहाँ देखो, go to Google, you have all the information over there. What जी. you take from that information becomes your knowledge. Hmm. आप अपने knowledge को कैसे use करते हो becomes your intelligence. And how much of your intelligence you give back, because you have to give back. Hmm. How much of it you give back becomes your wisdom. Right now, everyone is in the stage of gathering information. Not everyone, but 70-80% of the population is in the process of gathering information. जी. वो आएगा, वो knowledge वाले stage पे आएगा, intelligence वाले stage पे आएगा. Hmm. Eventually हो जाएगा. But you just have to be patient and you have to keep learning. जिस दिन आपने ये बोल लिया कि yeah, I know everything, Hmm. उस दिन आपकी learning खत्म. खत्म. जी. बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स. वाओ. Also, tell me, how easy or hard do you find it to challenge, these certain misconceptions through your writing? Misconceptions. It's actually easy क्योंकि I'm a fiction writer. Hmm. तो मैं तो कहानियां लिखता हूँ, Hmm. कहानी बोलता हूँ. In my story, I am free to do anything. तो मुझे कोई चैलेंज नहीं होता. जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेता है.
Hmm. जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है. That's all right. Right. Would an evening full of glowworms be any different if the stories in it were your personal experiences, around the people in your surrounding? Actually, quite a few of those stories are based on my own personal experiences, what I have seen, what I have, um, experienced while growing up, Hmm. looking around me, and all of that. Quite a few of them. There are issues, stories, mein. There are Hmm. issues like child abuse. There are issues like spousal abuse, um, cruelty to animals. Hmm. ये सारे तो मैंने आसपास देखे हुए हैं. तो most of it is based on my personal experiences. Now, I'm sure of this one thing that you must have faced maybe a little or more. However, skepticism for writing about feminist themes. Do I say that right? Being a male author. Yeah, absolutely. Hmm. A lot of people tell me. Huh. Now, your choice and ideas, they definitely would have been questioned. How did you made yourself sail through that space? I have grown up in a woman-dominated household. I am surrounded by women. My wife, my daughter, my mother, my sister, niece. Hmm. ये सारे. As long as your family is with you, फिर Hmm. बाकी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. A lot of people come and say, okay, what do you know about women and women's issues and all that? Hmm. I just listen to what my mom says or what my wife says, my sister says, what they experience, और मैं उसके बारे में लिखता हूँ. Hmm. And if they are supportive, that's all that matters. इतना क्लैरिटी के साथ इतना कॉन्फिडेंट होना only comes when actually you are being supported by your family. Oh yes. Hats off. And it is the truth. मतलब आजकल हम बोलते हैं मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, किसी ने ट्रोल कर दिया, Hmm. किसी ने कुछ बोल दिया जो उसको पसंद नहीं आया. वो Hmm. उसकी प्रॉब्लम है. लेट हिम और हर डील विद इट ना. Hmm. व्हाई डू वी हैव टू डील विद दैट? Very true. Very true. So, do you plan on to expanding the characters universe from an evening full of glowworms? I mean, into Yes, full-length yes, novels? Wow. yes, absolutely. I'm writing. Actually, I have written two अच्छा. full-length novels, जो अभी I think in the next 6 months publish हो जाएंगे. And a few of the characters to start with have Hmm. expanded. एक arc बन जाएगा because I'm creating a universe. And Beautiful. एक career arc बन जाएगा Hmm. for some of these characters. Wow. So their stories now, they are going to be told in utter details, yes? Yes, yes. Complete from when they're growing up and Hmm. what they have seen, what makes them who they are. Beautiful. Fingers crossed. Waiting. Yeah, me too. Just waiting मेरा publisher कब editing खत्म करके they will publish it. Best wishes. So, I got to know that like the universe that you're creating now, it's two characters at a time. Yes. Okay. So, what's the dynamic between those two characters that you have chosen for the next book? The dynamic, देखो, they are intelligent, so they are going to have idea clashes. They Okay. are strong, so they are going to face off against each other. Hmm. And eventually they will find their own space. They will find their own um, happy world that they will create. Hmm. क्या उसमें टाइम लगेगा, उसमें तो मैं मजे ले लेके लिखने वाला हूँ. ये भी सही है. Like book after book. Book after book, and you need to have fun with the characters. You need Hmm. to enjoy writing about the character. अगर आपको राइटर सॉरी कैरेक्टर पसंद नहीं है Hmm. तो आप क्यों लिख रहे हो इसके बारे में? Actually, एक और चीज है when you write characters इतना डिटेल में, इतना डेप्थ के साथ, actually it happens कि you actually start living them. मतलब ऐसा हो जाता है कि इतना इमर्स हो जाते हैं कि कैरेक्टर से बाहर आने के लिए थोड़ा स्पेस लेनी पड़ती है फिर. Does that happen with you? Oh God.
The best person to answer this question would be my wife. अच्छा. She would be the one who would be cracking her knuckles and saying, "यार क्या है? He's still in that character." Hmm. But नहीं, मुझे तो नहीं लगता है. According to me, I'm all right. Hmm. But yeah, my wife, my mother, they'll be the best people to answer this question. Actually, you won't know that. वो उन्हें I ही wouldn't पता know. होगा. हाँ. मुझे पता करना भी नहीं है. I'm very जी. happy. बहुत सही. कट क्लियर रिस्पॉन्स, मुझे पता नहीं करना. ओके, सो जैसे मतलब इस वाले फेज से बाहर आने के लिए डू यू नीड, लाइक, डू यू स्टॉप विद योर राइटिंग, या कैसे रहता है इफ यू आर टोल्ड कि हाँ भाई अब ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट डू यू डू देन? I start writing something else. अच्छा. I consciously start writing something else. मेरे पास whiteboards हैं हम्म. मेरे रूम में, and every whiteboard has got a different story arc. ओके. और उसके ऊपर obviously I have a flow chart and हम्म. milestone charts and all of that, thanks to the IT background. वो एक milestone आ जाता है, मैं टिक कर लेता हूँ, and then if I feel or if somebody tells me what, this is getting a little too much, I'll हम्म. switch to another story, दूसरा whiteboard, हम्म. वो कंटिन्यू कर लेता हूँ. अगर वो भी नहीं काम करता है, and if I really have a writer's block and all of that, मैं हम्म. गाने लिख लेता हूँ, and then I come back. बहुत ही सही. लाइक यू हैव दैट कीपिंग ऑक्यूपाइड स्केड्यूल, कि मतलब पूरा डिटैच ना हो, मस्ट कीप इन फ्लो. Yeah, you need to do that. You need to keep in flow. हम्म. Something that I had heard on another podcast. हम्म. Um, Mr. Rohit Shetty has said this, and I know a few other people also have said this. हम्म. He said we need to keep working. The moment we think to ourselves that we want to retire, we want to do nothing, हम्म. your brain stops functioning, and if your brain stops functioning, your body stops functioning. Oh yes. So you need to keep flowing. You need to keep working on हम्म. something or the other. तो वो क्रिएटिव जूस काम करता है. Amazing. Your stories, they very amazingly show how a moment is enough capable of changing everything. Now, what is that one real life moment that entirely shifted your perspective? Actually, not yours, the perspective of the writer in you. Actually, there have been several moments, but one of the highlights Hmm. has been when I was, I think, in class 10. अच्छा. तब एक स्टेट लेवल ऐसे कंपटीशन आया था, Hmm. and the topic was given to us about something, and I wrote an essay, a big Okay. one, and मैं सबमिट कर दिया. मुझे तो नहीं पता था कि क्या होने वाला. Hmm. I ended up winning the state level competition, first prize उसमें. तब मैंने सोचा कि हाँ यार, लिख सकता हूँ. Hmm. तो वो लिखते गया, लेकिन पब्लिश होने को काफी टाइम लग गए, काफी साल लग गए. जी. जैसे अपने इंट्रोडक्शन में आपने बोला कि आई राइट, आई एम अ स्टोरी टेलर हु समटाइम्स गेट्स पब्लिश्ड, और यहाँ पर भी अभी एक और आया कि पब्लिश होने में टाइम लगा. हाउ हैज बीन योर एक्चुअल एक्सपीरियंस विद पब्लिशिंग? Uh, it is a very, very detail oriented and a very, very, in-depth job. हम्म. Everyone says, every writer will come and say, यार publisher ने book publish नहीं किया. हम्म. But ऐसा नहीं है. The publisher, poor guy, he or she needs to think about the market acceptance, needs to think about the economics. अब क्या हो जाता है, Amazon does give you the option of returning products. हम्म. Many times a book has been ordered on Amazon, has been read, has been returned. A जी. speed reader will return the book in one day, book हम्म. खत्म करके. हम्म. एंड वो जो कॉस्ट है वो पब्लिशर को बेयर करना पड़ता है. तो उस बेचारे को ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि क्या हो जाएगा. तब जाके he or she will say कि what, this topic or this style of writing will be accepted in today's society. जी. If you look at authors, Indian authors, हम्म. um, authors like Ashok Banker, Ashwin Sanghi, हम्म. I'm a huge fan of them. But
इनिशियली मैंने उनकी कोई किताब के बारे में सुना नहीं था. जी What changed is Mr. Chetan Bhagat, credit where it is due. मतलब I don't identify with his writing style, obviously, हम्म because he writes romance and I can't write romance. I can't read romance. okay मुझसे नहीं होता है. But he actually got the whole country reading English books by Indian authors. very true And when he started, that's when everyone started exploring. You know what? I've read all the Chetan Bhagat. I need to हम्म see more Indian authors. That's when you started reading a Chitra Devakaruni or an Indu Sundareshan or an Ashok Banker, an Ashwin Sanghi, a Mukul Deva, all these guys. हम्म और उनकी किताबें, they're like everyone has such a distinct style of writing stories. It's amazing to just read and enjoy जी those stories. So yeah, it's all based on what the society accepts. पब्लिशर ने ये देखा ही होगा कि स्टार्टिंग अश्विन संघी साहब की पहली किताब द रोसेबॉल लाइन व्हिच ही रोट एंड पब्लिश्ड अंडर एन एक्रोनिम शॉन हेगिंस, इट नोबडी रियली न्यू अबाउट इट. पब्लिशर हम्म ने पब्लिश कर दिया. हम्म जब पब्लिशर ने देखा कि हाँ मार्केट खुल गई है, देन दे रीपब्लिश्ड इट अंडर हिज नेम. तो वो सारी चीजें पब्लिशर को सोचनी पड़ती हैं. अ राइटर विल नॉट थिंक अबाउट दिस हम्म कॉन्शियसली. राइटर विल ऑलवेज थिंक आई हैव अ स्टोरी, इट इज अ गुड स्टोरी, आई नीड टू टेल इट. बाकी सारी चीजें जो है, दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट गोज इनटू अ बुक ना. बाकी सारी चीजें, द कवर डिजाइन, द नंबर ऑफ पेजेस, वो पेज का फील, हम्म वो सारी चीजें पब्लिशर को सोचनी पड़ती है. believe me sir you are the first person जिसने ये जो एक हम्बल कॉर्नर दिया है ना पब्लिशर को ट्रेडिशनल पब्लिशिंग को has never come across never रियली? बट इट really इज द ट्रूथ. it is the truth and आप मानेंगे क्योंकि जैसे जितना मैं बात करती हूँ पब्लिशर्स बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में भी हैं लाइक दे कीप ऑन कांटेक्टिंग कि हाँ अगर कोई ऑथर है किसी को पब्लिश करना है तो वी आर हियर टेल अस मैंने भी ये चीज थोड़ी थोड़ी सोची बट इतना नहीं सोचा था जिस तरीके से आपने बताया एंड very honestly I'm having a very soft corner for all the publishing houses right now Yeah, and it hmm is true, because look at it, you have publishing houses like Penguin, hmm Westland. Westland to Bichara had to sell off its own brand. हाँ So what would have gone through their minds? You never know. You have a Mehta publishing house and a Dimple Prakashan, which publishes, I think, only Marathi books. You have several publishing houses hmm because they are not a single person running a show. They have to worry about all the staff that is working with them. very true A writer is solo. Writer क्या कर लेगा? He or she will go, he will talk to a few people, get a few ideas, sit on a beach. Well, I don't do that. hmm Sometimes I do that. Yes. Sit on a beach, use a laptop, write it. Edit भी नहीं करते हैं बहुत सारे writers. I'm हाँ guilty of that as well. अच्छा Yeah, nowadays I edit my book very consciously because I see the pain that my editor goes through. तो मैं थोड़ा consciously editing करता हूँ. But yeah, hmm the publisher goes through all these headaches. Creative juices हैं. तो राइटर actually थोड़ा क्रैबी भी हो जाता है, कभी hmm क्रैंकी हो जाता है, बोल देता है कि ये क्या है, दिस इज नॉट राइट. वो पब्लिशर को पता है मार्केट रियलिटी, उसको करने दो अपना काम. every time this comes up the author उसका अपना कंसर्न ये होता है कि यार मैंने अपनी किताब लिख दी now I'm trusting the publisher with my book and they're not doing the job the way they should टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं मेरे एडिटर ठीक काम नहीं कर रहे हैं सो नाउ आई डोंट नो वेदर दे आर टर्म्ड एज rants or they are termed as complaints बट जिस तरह आपने बताया है दिस एक्चुअली मेक्स सेंस मार्केट के बारे में एक ऑथर को जिसने 4 5 6 किताबें लिख दी हो उसको भी उतना आइडिया नहीं होगा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप छः नहीं सात 10 किताबें लिखने के बाद भी यू जी आर गोइंग टू अ पब्लिशर हु हैज पब्लिश्ड 100 बुक्स. जी वो तो ज्यादा रियलिटी पता होगी. हम्म सम ऑफ दीज कंप्लेंट्स माइट बी वैलिड. पब्लिशर टाइम पे पब्लिश नहीं कर रहा है, या कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है, या हम्म एडिटर ठीक नहीं एडिट कर रहा है. हम्म वैलिड. सम ऑफ देम माइट बी वैलिड. यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर योर जॉनर. अब मेरा जो जॉनर है वो मार्शल आर्ट्स एंड मिलिट्री एक्शन है.
जी, I cannot go to an editor who edits romance बिल्कुल and बिल्कुल सही। expect a good job. हम्म। That poor editor, वो तो अपना एक्सपीरियंस लगाएगा रोमांस एडिटिंग में। वो बोल बिल्कुल। देगा ये मार्शल आर्ट्स, ये एक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको कम कर दो। एज अ हम्म। राइटर आई विल से मुझे कम क्यों नहीं करना है, दिस इज माई सिग्नेचर स्टाइल, ये मैं नहीं करूंगा। दैट पर्सन विल से थोड़ा रोमांस ऐड करो। So you need to find the right editor. There has to be a meeting of the minds. You have to find the right publisher who believes in that kind of a market. It's just like film. हम्म। You cannot have a Ram Gopal Verma sir go and make a romantic story like a Karan Johar. ट्रू। वो तो चलेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल। I need to search Google up and down to get to know कि podcast कैसे पिन करते हैं। I need to pin this really कि ये हमेशा टॉप पर रहे और at least people listen to this कि it's not always the publisher। वो हमेशा गलत नहीं होता। नहीं नहीं, मैं अपने राइटर भाई बहनों के लिए तरफ से भी बोलता हूँ कि नहीं नहीं, समटाइम्स इट इज द पब्लिशर। ये भी एक साइड है और ये पता होनी जरूरी है, स्पेशली टू द डेब्यू ऑथर्स। Absolutely, debut authors need to understand. हम्म। See, because जब आप डेब्यू कर रहे हो in your हम्म। writing journey or in anything for that matter, हम्म। you cannot be the best. It takes time. जी। वो आपकी ग्रोथ है। आप अब मैं अपनी पहली किताब पढ़ता हूँ तो मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कि ये किताब मेरी पहली किताब है। मैं चुपचाप बैठता हूँ। मुझे पता है मैंने क्या गलतियां की हैं उसमें। जी। मैं नहीं बोलता हूँ। हम्म। But yeah, that's growth that happens. A debut author will not understand this, and it is not possible to understand this without making mistakes. जी। The only other way to do it is to go and read as much as you can. हम्म। किसी भी ऑथर का नाम ले लो, उसकी पहली किताब पढ़ो और उसकी मोस्ट रीसेंट किताब पढ़ो, आपको ग्रोथ दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह And that is the only way that you will understand as a writer, as a debut writer. रहे। जी। So we had started कि if there was some moment that change your perspective, the change the perspective of the writer in you, and we ended up on publishing and the publishers. Yeah, big journey. Big journey। पूरा 10th से अब तक सब कवर हो गया सर। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बट ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर से हो गया ना, फीलिंग्स। यस। फीलिंग्स। एंड आई एम अ प्रॉपर जेन एक्सर। मैं वो जनरेशन से हूँ हाँ। जब हम डायरीज लिखते थे और हमें जी। बहुत गुस्सा आता था अगर किसी ने हमारी डायरी पढ़ ली तो आई एम ओके विथ ओनली शेयरिंग हाइलाइट्स। हाँ। So writing about the life and life struggles of different characters, different people, surely would have made you take a pause and rethink about what all you have been considering so far. कंसिडरिंग इन द सेंस। जितना आपने लिखा है अब तक, तो पहले उन स्ट्रगल्स के बारे में आपकी क्या सोच थी, और उनको जब आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर जब आपने लिख लिया, तब आप उनको किस तरीके से सोचने और देखने लगे हैं? हाँ या ऑब्वियसली हम्म। इट चेंजेस व्हेन यू लुक एट इट। हम्म। अब बचपन में स्कूल में जब हम देखते थे कोई चीज को होते हुए, somebody is not studying or not doing homework, हम्म। हम सोचते थे क्या है यार, ये होमवर्क करके नहीं आता है, gets punished every day. हम्म। But as you grow up and if you start writing about that character, then वो character के struggles क्या होते हैं? Even if they are completely imaginary struggles, you start thinking ऐसा जी। हो सकता है क्या? And then that acceptance comes in. हम्म। I've grown up with dogs and cats around me. हम्म। बचपन में तो I used to have 3-4 dogs, a few cats in the house roaming around. I grew up in Goa. Yeah. तो ये इनका जो बिहेवियर, रिएक्शन, टेम्परामेंट होता था, हम्म। that kind of worked like an education system for me. Okay. And then I just expanded that to how people, because obviously people have a longer lifespan. हम्म। तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो सिमिलर या डिफरेंट होते हैं, हम्म।
It teaches you a lot. तो आपका कंपैरिजन का ग्राफ था, दिस वाज रियली अमेजिंग। जो होमवर्क से आपने रिलेट किया है टू लाइफ सिचुएशन, अमेजिंग। लाइक एवरी अदर चाइल्ड हु इज नॉट एबल टू कंप्लीट द होमवर्क, वो भी अगर इसको सुन लेता है तो विल बी लाइक ओके आई एम गुड, कोई बात नहीं अगर मैंने नहीं किया। या कोई बात नहीं है. हाँ, Nobody remembers how many marks you scored. और इसका तो एक वीडियो भी आ चुका है ना कई साल पहले. जी। Nobody remembers how many marks you scored in the 8th or 9th standard. नोबडी रिमेम्बर्स, और खुद नहीं याद रहता। खुद भी नहीं याद रहता है, सिर्फ बचपन के दोस्त याद रहते हैं और क्या क्या कांड किए हुए हैं वो वो याद याद रहते हैं. रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके, एज अ म्यूजिशियन सर, टेल मी, how helping did music prove to keep bringing you back to your writing every time you felt distracted or detached? How was it? Okay, I don't know if this is going to make sense, but I'll say it anyway. Hmm. म्यूजिक में मेट्रोनोम होता है जिसे हम मीटर कहते हैं. Yeah. रिदम, टोन, टोन Hmm. क्वाल इफ यू सिंगिंग देन टोनल क्वालिटी, Hmm. एंड ओवरऑल मेलोडी होती है. अब वो मेलोडी में हाउ डू यू कीप योर लिसनर एंगेज्ड. Hmm. आप पहला स्टैंजा लिखते हो, जी। उसका एक ट्यून बनाते हो, फिर स्टैंजा लिखते हो, उसका एक ट्यून बनाते हो. अगर वो ट्यून सिमिलर हुआ, Hmm. people are going to get bored. You yourself as a listener are going to get bored of your own song. So you need to surprise yourself Okay. and take yourself back. Hmm. तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट जो होती है Hmm. छोटे से 4 लाइन के स्टैंजा में, Hmm. उसको आप एक्सपांड अगर कर सकते हो 4 पेजेस में इन अ स्टोरी, जी। दैट वर्क्स. मेरे लिए तो बहुत काम करता है. इफ आई एम राइटिंग अ सॉन्ग, इफ आई एम क्रिएटिंग अ ट्यून और मैंने पहले 4 लाइन का ट्यून बना दिया, Hmm. अगले 4 लाइन जो है इट हैज टू बी डिफरेंट, इट हैज टू पंच यू. Hmm. The same thing I apply in my stories. और वहां से it correlates. If I can do that in a tune, I Hmm. can do that in a story. In a story, जी, amazing। ये भी बहुत अच्छा आपने explain किया। Did you ever find that the rhythm of storytelling, it mirrors the rhythm of composing music? Yes, yes, absolutely, and vice versa. Rhythm of composing music or music Hmm. tune or a composition, it you know impacts the way you write a story as well. And it depends on your mood also. अगर आप एक action scene लिख रहे हो, वहां पे Hmm. writer's block आ गया, जी। then the music that you compose is going to be very, very Iron Maiden thunderstruck type. अगर आप एक रोमांटिक सीन लिख रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कुमार सानू साहब टाइप. Hmm. एंड एवरी इमोशन दैट यू गो थ्रू, इट Hmm. हेल्प्स. सो यू हैव टू चैनलाइज दैट इमोशन. ऑल ऑफ अस हैव डन दिस. ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनल क्रीचर्स. कुछ हो गया, कुछ सिचुएशन आ गई, कुछ रिएक्शन दे दिया, किसी को Hmm. पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, एंड इट्स ओवर. उसका एक आफ्टर इम्पैक्ट होता है. Hmm. इफ यू चैनलाइज दैट एंड पुट इट इनटू योर राइटिंग, Hmm. आपका गुस्सा भी निकल जाता है, आपका वो इमोशनल स्टेट भी निकल जाता है, एंड यू माइट जस्ट एंड अप राइटिंग समथिंग गुड. अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो जाती है। बहुत ज्यादा, बहुत क्लियर हो जाती है. अगर पॉपुलर हो गया हम्म। या वायरल हो गया, आजकल तो वायरल रील्स होते हैं, जी। वायरल हो गया तो अब तो स्टार बन जाते हो. ओके, नाउ writing any piece that makes some social statement, it isn't an easy task. That's a courage. You know already that n number of, for and against will be shot at you if you do so. While writing, how often did you have to, shut ears to your own voice that 100% would have shouted contrast to what you contemplated about? यू जस्ट राइट, बिना सोचे समझे. Hmm. एक एक चीज एक इंसान ने कही थी मुझे, राइट विथ फ्रीडम, Hmm. एडिट रूथलेसली. Wow. तो यू जस्ट राइट. जो आई मीन
there's always going to be people who are not happy. There's always going to be people who are happy. You cannot please everybody. Hmm. आपकी एक audience होती है. Military action, martial arts, this audience is very, very limited. Very limited. बिल्कुल. Nobody is going to understand why there is detail in the way a fist is made and why a fist is being thrown in a particular angle. उसमें elbow का angle क्या है, वो description ज़्यादा लोग नहीं समझते. जी. And that's okay. आप लिखो. So people are going to be unhappy. People are going to say boring. It's all right. You're not writing for people. You're writing for yourself. You're writing because you have an idea. That idea might inspire someone in a different corner of the country, in a different corner of the world. And जी. that person might take away one sentence from that. And if that one sentence has created a positive impact on that person, your job is done. बिल्कुल. तो ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कितने लोग अनहैपी हैं, कितने लोग अगेंस्ट हैं. Social statements, yes. I mean, we write social statements based on what we like about the society, what we don't like about the society. हाँ. It's a democracy and it's a free society. जी. लिखना जरूरी है. You need to show dissent. You need to voice out your opinion. तब जाके कुछ बातचीत होगी. अगर वैलिड है आपका ओपिनियन तो उस पर शायद चेंज होगा. अगर वैलिड नहीं है तो उसके ऊपर आपको एक ऑपोजिशन आएगी, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आएगी और आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी. चेंज होगी. You will calibrate yourself. Now, when you have brought this in conversation, कि you write because you feel like writing. You have an idea. That's why you are writing. Nowadays, sir, लिखा इसलिए जाता है ताकि ऑथर तो बन जाए, ठीक है, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाए. This is why mostly people they start writing. Do you have something to say on that? See, everyone who writes sooner or later will become a best-selling author. Being the best-selling author does not make you the best author. बिल्कुल सही बात. You're selling at a particular time because at that particular time, एक साल या 2 साल या 3 साल के period में, whatever you write resonates with your readers, जी. with a wider audience. तो आप best-selling बन जाते हो. The rest of the times, everyone writes because they have a story to tell. And that is how it should be. Best selling is just a reflection of the time. वो अपने आप आ जाएगा. I mean, if you look at Jeffrey Archer, when he wrote his first book, Not a Penny More, Not a Penny Less, he had multiple drafts of his first book. उन्हें खुद को ही पसंद नहीं आ रहा था. जी. And eventually, when he wrote it, I remember reading Not a Penny More, Not a Penny Less when I was 10 years old, I think. और मुझे बहुत मजा आया. और फिर मैंने उनकी दूसरी किताब उठाई, Cain and Abel. And that book, I think everyone who reads books in the English language must read Cain and Abel. तो उनके लिए भी टाइम लगता है. It did not become a bestseller immediately. टाइम लग गया. काफी सारे एडिशंस छप गए. तब जाके eventually today Cain and Abel is a cult book. और I think उसको 30 साल तो हो गए हैं. 30-40 साल हो गए I think Cain and Abel को. So it takes time. You cannot think about being a best-selling author or a best-selling writer, musician, anything. You have to create a product with all honesty. उस टाइम पे एक आइडिया है, पूरी ईमानदारी से वो आइडिया को आप पेपर पे उतार दो. देखेंगे बेस्ट सेलिंग क्या होता है. कभी ना कभी हो जाएगा. अब से 100-150 साल पहले जिन ऑथर्स ने लिखा, उन्हें नहीं पता था कि उनकी किताब आज की डेट में स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी. Yes, and that is so accurate. I'm glad you brought up that particular sentence. आपने ब्लैक ब्यूटी पढ़ी है एना सिवल की? No, I haven't. You should. Anna Sewell wrote this book at a time when horses were being used as a means of transport in London. And Anna Sewell was completely paralyzed. वो सिर्फ लिख सकती थी. And she wrote Black Beauty, which is the autobiography of a horse. And she died before it was published.
She had no idea that Black Beauty would become a cult book read by people of all ages Hmm. and people identify with it. मैं तो आज भी, I get emotional when I read Black Beauty. Now, this is something people actually need to consider. They are writers, they have ideas. उनका काम है लिखना, एक्सप्रेस करना और जो बेस्ट टू बेस्ट एक्सप्रेशन हो सकता है उसको पेपर पे उतारना. एंड it just shouldn't be about being the best selling author. Yeah, it shouldn't. I mean, भगवत गीता में लिखा है कर्म ही धर्म है. तुम जी, राइटर हो, तुम्हारा कर्म है लिखना, तुम लिखना. अपना हाँ, कर्म करो. बेचना खरीदना is not the writer's job. हाँ. This is something I don't talk about to every author, every other author, but हाँ, flow में आ जाता है तो I actually beg for a good response, and this was one. Thank you. Pleasure. Okay, so your protagonists, they are seen facing extreme situations, and they all have chosen to fight through. Yes. Yeah. So, do you believe struggle being necessary for a meaningful life? Oh, yes. Okay. Yes, hands down, absolutely. Without a struggle, your life is boring. Hmm. It's very simple. When I was growing up, Hmm. for the first 8 years, I lived in a place called Vasai, which is near Mumbai, Hmm. and then we moved to Goa. And my mother, she had a very good government job. Even today, everyone is very crazy about government jobs and all of that. Hmm. She had a government job. She had to quit it, That's fine. and she had to struggle to learn a new language in a new state to communicate and pick up another job. वो उनका struggle था. Looking at her struggles only, we learned and we said, all right, not that bad. Hmm. हो सकता है. थोड़ी polish भी आ जाती है, एक additional language आ जाती है. You meet new people, you learn to face different situations. जी. If you don't have these struggles, if you don't have the scars on your knees or your elbows, Hmm. you haven't played. Wow. Amazing. Like you sum this up with just one statement, and समझने के लिए बस इतना काफी है. जरूरी भी है. मैं आजकल just digressing from the topic, मैं बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए. Hmm. And I had this conversation, I think, a couple of weeks back with some of the kids in my neighborhood. Hmm. They were playing cricket. And cricket खेलने के लिए they have come in with gloves, bat, shoes, हाँ. socks. और वो लोग बॉल को एकदम सीधी तरीके से मार रहे हैं. Hmm. They're hitting straight drive, which is a very good thing, hitting a Hmm. straight drive. वो ऐसे वो लोग खेल रहे हैं ना. आज से यार ऐसे इतनी शांति से क्यों खेल रहे हो और ये सब क्या है. हाँ. सिर नहीं अगर लग जाते है Hmm. भागते भागते ना. लाइक यार, हम तो हवाई चप्पल में खेलते थे क्रिकेट और मजाल है कि हमने किसी के कांच नहीं तोड़े. तुम तो यार बाहर गाड़ी रखी है, गाड़ी सो सेफ, कुछ होता नहीं है, कुछ स्कार्स नहीं आते हैं. अभी कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू माय मम्मा इसी बात पर कि मतलब एवरी डे कहीं ना कहीं से खून बह रहा होता था जब घर पे वापस आते थे खेल के. हाँ हाँ. अच्छा देखिए एक और चीज, चोट लगती थी, दर्द भी खूब होता था, खून भी खूब बहता था, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन इट वाज कि नहीं खेलने जाना है, स्किप नहीं होता था. हाँ, स्किप नहीं होता था, बिल्कुल ही हाँ. नहीं. ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे क्वेश्चन में ये था कि कैन समवन फाइंड अ मीनिंगफुल लाइफ विदाउट हार्डशिप्स? नो. स्ट्रेट नो. You won't have a story to tell. जी. And everyone, there are 9 billion people in the world, हम्म. everyone has a story to tell. If you have not had hardships, you won't हम्म. have a story to tell. It will be so flowery, it will be so boring, it will be like, I know that there is a fan audience and I know that people are going to really, really curse me for this, but it will be like a Disney fairy tale. उसमें मजा नहीं आता. बिल्कुल. आई मीन डिज्नी फेरी टेल भी होती है सर, उससे भी उस उनके स्ट्रगल्स होते हैं तभी वो 2 घंटा चलती हाँ. हैं. अरे Disney fairy tales are actually a very flowery version of the original, जो Grimm's fairy हाँ. tales थे. जी जी. मेरे पास वो है, Grimm's fairy tales का ओरिजिनल बुक है मेरे पास. मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने को. प्रॉपर स्ट्रगल है उनका भी.
Yeah. I mean, when I read the Disney version of Cinderella Hmm. and then I read the original Grimm brothers version, Hmm. मुझे हंसी आ जाती है, बोले यार There's ये a क्या lot है? of difference. Huge difference. Huh. This again is something that needs to be taken from this particular podcast. एक्चुअली स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स के बिना नहीं ही होगा, वो स्टोरी अच्छी नहीं नहीं होगा, बनेगी। इट्स स्टोरी अच्छी नहीं बनेगी, बोरिंग हो जाएगी एंड हम्म। आपकी खुद की लर्निंग नहीं होगी उसमें। आई मीन इट्स ऑल नाइस टू हैव अ कंफर्टेबल रन थ्रू द एंटायर थिंग बट खुद को ही मजा नहीं आएगा। जी। एंड में अगर एक क्वेश्चन हो कि यहाँ तक आने के लिए क्या क्या किया, अगर कोई पूछने लगे, लाइक समवन स्टार्ट्स आस्किंग कि कैसी रही जर्नी, तो बताने के लिए होगा क्या? हाँ, एंड दैट इज सो बोरिंग। बोरिंग। नाउ with your own unique way of structuring short stories, which actually have high emotional impact, what do you think about short fiction, now that being underrated as compared to novels? See, I don't know if it is underrated or if there is an audience for it or something like that. Yes, if you ask me, Hmm. um, I read both. I read short fiction anthologies also. I read full-fledged novels also. Hmm. I enjoy both. There is an audience that will enjoy the short stories because there will be people who will be traveling by a metro. Hmm. जो 15 मिनट में they will reach their destination. उस Hmm. टाइम पे वो क्या करें? If they pick up a big novel, Hmm. तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है रीडिंग में। जी। If they pick up an anthology, तो वो स्टोरी 15 मिनट में पढ़ के खत्म भी हो जाती है। और फुलफिलिंग लगता है, पढ़ा और अच्छा पढ़ लिया। हाँ, अच्छा पढ़ लिया। A few friends of mine have told me that like this exact very thing. We like to read because we are traveling, हम्म। commuting to work. उस टाइम पे हमको 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं, उसमें हम पढ़ लेते हैं, हमको अच्छा लगता है कि हमने कुछ पढ़ लिया। जी। अब ये तो मेरे दोस्त हैं तो ये तो अच्छा ही बोलेंगे, तो हम्म। मैं उनकी बात नहीं मानता। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि पहली किताब भी इन्हीं लोगों ने पढ़ी थी और इन्हीं लोगों ने बोला, हम ही एक दूसरे को बोलते रहते वहाँ क्या लिखा है। हम्म। बट ये एक सही बात है भी। क्या सही बात तो है। हाँ। It doesn't let you focus. I mean, if you're really into reading and if you like reading and all of that, it doesn't let you focus. ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आई थिंक 4 या 5 साल पहले मैंने इनहेरिटेंस पढ़ी थी बाय क्रिस्टोफर पाओलिनी। ओके। इट वाज द लास्ट बुक इन द इनहेरिटेंस लाइफ साइकिल, हम्म। एटलीस्ट एट दैट टाइम। उसके बाद भी उन्होंने लिखी, he wrote Murtagh and he wrote The Fog, the Witch and that something else, I forgot the title. सारी हैं मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में। इनहेरिटेंस इज 858 पेजेस और मैं इतना एंग्रॉस हो गया था इन एरागॉन, एल्डेस्ट, ब्रिसेंगर एंड देन इनहेरिटेंस, आई कुडंट पुट डाउन इनहेरिटेंस और मैं 2 दिन तक सोया नहीं बिकॉज आई वाज रीडिंग हम्म। और बाकी कोई भी काम पे फोकस नहीं था। सो यस, शॉर्ट स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट, हम्म। एज इम्पोर्टेंट एज बिग बुक्स, ताकि आप सो जाओ, टेक जी। रेस्ट। ऐसे मत करो, not sleep for 2 days and read books and all of that. A lot of people do it and we all laugh about it. But yeah, इसके impact long term हो जाते हैं जब आप ह्यूमर हो जाती है, थोड़े ग्रेज आ जाते हैं बाल में, तो हम्म। इसके इम्पैक्ट्स नजर आते हैं। Why I particularly asked this was because जैसे शॉर्ट मूवीज वाला ट्रेंड है एक, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो बहुत मीनिंगफुल होती हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे सेलिब्रेटेड एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, दे डोंट गो फॉर द शॉर्ट मूवी थिंग। शॉर्ट मूवीज आप मोस्टली कोई भी देखेंगे, देयर आर ऑल न्यू फेसेस, एवरी शॉर्ट मूवी हैज अ न्यू फेस। तो ओके। कहीं ना कहीं मैंने इसको ना शॉर्ट फिक्शन से रिलेट किया कि शॉर्ट फिक्शन भी, अब जैसे भाई इतनी सारी स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरीज एक बुक में कंपाइल करी है ऑथर ने, वो लिखा है, बट लोग को फिर भी क्या चाहिए कि पूरी नॉवल मिल जाए। जैसे मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई आपने इतने सारे कैरेक्टर्स हैं आपकी बुक में, सो विल यू बी एक्सपैंडिंग द कैरेक्टर्स वर्ल्ड, आप नॉवल बनाएंगे उसकी, नहीं बनाएंगे, क्या है? तो
अभी भी शायद रुझान थोड़ा नॉवेल्स की तरफ है, बट पर्सनली, मतलब वेरी पर्सनली, आई एम टुवर्ड्स द शॉर्ट फिक्शन थिंग। क्यों? क्योंकि छोटा लिखा गया है लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है कि काफी दिन तक आप उससे रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास, लाइक अपनी सराउंडिंग्स को, अपने लाइफ सिचुएशंस को। इट्स easy to relate with the short fiction. Yes, it is easy to relate with short fiction because usually it is based on an event or an incident. Hmm. It is not based on the career or the character arc. Actually, हाँ. उसका आर्क बहुत कम, क्योंकि वो स्कोप स्पेस ही नहीं होता है. It is Hmm. based on an event and incident. You might relate to the incident. You might not relate to the character as a reader. जी. And then there are times where you will relate to the entire arc of the character. So, I mean, since you spoke about films, Hmm. it's all about market salability, market acceptance. The more established actors will not choose to do short films because they are accepted in a certain way, in a certain image. जी. Hmm. As a writer, you don't need to worry about that. वो freedom मिल Hmm. जाती है writers को. You can write a short story, you can write फुल फ्लेजेड नॉवल. ये तो आपके मूड के ऊपर है, आपको एक्सप्रेसो शॉट पीना है या फिर आपको लॉन्ग आइलैंड आइस टी पीना है. बिल्कुल. ये बड़ा अच्छा आपने बोल दिया. आई गेस कोई फास्ट फॉरवर्ड में भी इसको सुन रहा होगा, अगर ये वाली लाइन आ जाएगी तो वो पूरा पॉडकास्ट सुनेगा फिर. हाँ. बिकॉज हु डजंट लाइक कॉफी? यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन. ओ एक्चुअली ऑल राइटर्स कॉफी पे जिंदा रहते हैं लोग. पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे वो प्रिपेयरिंग योर कॉफी. या सो you are a lyricist and a storyteller. Now, there is a lot of writing for both of them. Do you ever feel that some stories, they are better told as songs, and some songs would be more powerful as stories? अगेन यू आस्किंग द रॉन्ग पर्सन बिकॉज ऑल माय सॉन्ग्स आर स्टोरीज. जैसे मैंने एक गाना लिखा था, इट वाज जस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन people were stuck, and I wrote that Hmm. song and we actually released it also. Okay. That song is based on the struggle of somebody who has been deputed to a different country और वो pandemic फंस गया है and he's just longing to go home, meet his wife. तो वो एक कहानी Hmm. है. वो बन गया 3.5 मिनट का गाना. Hmm. अगर वही हमको एक्सपांड करके लिखना है then you'll have to build a career arc and all of that. जी. कि क्यों गया overseas. हाँ. But yeah, again, question to the wrong person. मेरे सारे गाने stories होते हैं और all my stories also can be made into songs. Again, you are able to say this so confidently because you know how you have woven them. आपने उनको बनाया ही इस तरीके से कि हाँ ठीक है, कोई एक स्टोरी है, कभी अगर कुछ नहीं मिल रहा, यू कैन पिक इट अप एंड मेक अ सॉन्ग आउट ऑफ इट. Yeah, absolutely. और हाँ. वो मैंने ही किया है ना, तो मुझे पता है कि गलतियां कहाँ पे हुई है, मैं सुधार सकता हूँ. जी. Okay. Now, there's this character Tekik from Handful. If he were to meet a warrior from an evening full of glowworms, what do you think they would talk about? They would exchange their war stories, their battle stories. Dekik, by the way, is based on a true character. Okay. Vlad Dekik, he was a Romanian prince, I think, who took over the reins. This is during the Turkish Hmm. Ottoman invasion of the West. अच्छा. And जो Dracula की story है, it has been expanded from the story of Dekik. अच्छा. So yeah, they would talk about their war strategies. जैसे Evening Full of Glowworms में there are these two warriors from an ancient time जो एक Hmm. sword fight pattern practice करते हैं. And Dekik uses spears. So they would probably talk about how their spears would function better in an open field battle or in close Hmm. combat. A sword would work better, spear would not work. Yeah, फिर Dekik would
possibly give some tips. Hmm. But yeah, Dekek would not survive too long. अच्छा. Yeah, Dekek wouldn't survive क्योंकि Dekek की medical condition ही खराब थी. I thought we conversation में ऐसा होगा कि हाँ, he wouldn't survive very long, but that's a different story. That's a different story. वो आपको, you know, you would need to read the story to understand कि क्या Hmm. problem थी उसको. Now that said, sir, अब जब वो बात कर रहे हैं, खाली वो आपने बता दिया कि ठीक है, वो एक अपनी स्पेयर की बात कर रहा है, दूसरा swords की बात करेगा. Do you think these characters they would gel up, or would they be able to get along, या फिर clashes होंगे उनके? If they are fighting on the same side, they would get along because all of them have been Hmm. experts in their martial arts. All of them have been experts in their weapons usage, and they know how to extend their weapons as part Hmm. of their arms. You know, when you look at our history only, when you look at Mahabharata, जी. all the weapons were very unique, Hmm. and all the warriors also wielding them were very unique. Like Krishna Bhagwan had the Sudarshan Chakra. जी. अभी सुदर्शन चक्र जो है, it is very equivalent to a discus. एक author ने एक किताब लिखी है where he has explained ancient weapons from the time of the Mahabharata. I think Hmm. Christopher Doyle है उनका नाम. He's Indian. He has written about the discus being two magnetic discs, serrated edges. Hmm. Because they are at opposite poles, they rotate at a very high speed. And to throw this discus, you need to practice the discus. You will not practice जी. anything else. Hmm. Like Arjun, he practiced archery. He was good with other Hmm. weapons also, but his best was archery. So all these warriors over time, you know, whether you look at Genghis Khan or whether you look at Dekek, for example, or I don't know, even Alexander, although Alexander, I don't consider him as one of the greater warriors. Hmm. But yeah, all of them, they picked up one weapon and they practiced that and they became experts at that. It became their जी. discipline. So if these warriors were on the same side, they would have Hmm. gelled well because they would be filling up each other's shortcomings. And if they were on opposite sides, they would Hmm. eventually beat each other up within an inch of their lives. Okay. Now, if a women-centric man with a strong idea and understanding around what feminism is and how it needs to be better understood is to be asked about the boldest and maybe most unconventional idea that he has for his future books, what would he say? And what would it be about? Well, the only place that you can take inspiration from is the women around you. Okay. And you know that kind of sums it up. Because आप अगर अपनी मम्मी को ही देख लो या अपनी वाइफ को देख लो, the way they manage things and the way they do things and all of that, उसको थोड़ा सा flair add कर लो या एक situation add कर लो, Hmm. and how they would react, you write that, you create a superhuman character. So बाहर जाके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती है. जी. आपने बहुत ही आसानी से ये बता दिया, बट मदर्स, वाइव्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, यही सबसे नो ऐसे होते हैं, ओवरलुक्ड कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के. शायद किसी और की मम्मी का, किसी और की वाइफ का स्ट्रगल लगता है कि अरे बाप रे, कैसे कर रही होगी, कैसे रह रही होगी, अपने घर में नहीं दिखता. ये वो वाली बात नहीं है कि अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं, ऐसा वाला नहीं है. ये कुछ सिचुएशनल होता है या क्या, आई डोंट नो, बट लिखने के लिए बाहर से इंस्पिरेशन चाहिए होती है. सो वुड यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट? This is again my philosophy and the way I've understood things over the years. Because obviously I wasn't born like this. It has taken me several years to become like this. हम्म.
आज अगर इफ आई एम सेइंग थिंग्स दैट शायद दो चार लोगों को पसंद आ जाए, ये अगर यही दो चार लोग मुझे बहुत पहले मिलते, हम्म। दे वुड हैव नॉट वांटेड टू टॉक टू मी, क्योंकि मैं ऐसे सोचता ही नहीं था. जी। सो इट ऑल हैपेंस व्हेन यू लुक इनसाइड. जी। आप अपने आप को देख लो, अपने फ्लॉज को देख लो, और देख लो कि कौन वो फ्लॉज को बर्दाश्त कर रहा है, हम्म। कौन वो फ्लॉज के साथ काम कर रहा है. दैट्स व्हेन you'll know कि there's a lot of magic happening inside. बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती. गलत। Like a few weeks back, a few months back, we were planning our trip, हम्म। and my wife and I were sitting and we were saying, हाँ ठीक है यार, गूगल पे देख लेते हैं, हम्म। or we'll go to maps and we'll see this place. हो हम्म। जाएगा. And it took us all of 10-15 minutes. अच्छा। Information available था. And then my wife said, बचपन में our parents used to plan this, हम्म। and there was no access. जी। There was no access to information. There was no access to, Google Maps or anything like that. हम्म। And our parents still planned it flawlessly. यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स ने तो पानी के बॉटल्स भी उठाए हैं. जी। आजकल हम्म। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यू जस्ट पुट योर हैंड आउट एंड एक पानी का बॉटल आ जाएगा. हम्म। But there was a time when our parents were planning it. So that's unheard of. That organizational skill हम्म। is unheard of. आप घर पे देख लो, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती. Very simple things, like हम्म। how to get your homework done, how your mothers would sit with you, get the homework done. um, when my wife teaches my daughter a few things, how हम्म। she teaches, क्या explain करती है, it's all amazing. यहाँ तक कि मेरी बेटी भी आजकल कुछ नया सीख गई है. वो मुझे उसने उस दिन चुप करा दिया. हाँ। She wanted to study the solar system and she was like, what are these planets about? हम्म। So I said, where we are right now is Earth. And then हम्म। I, drew a small uh, diagram of the solar system. And I said, the sun is a star. And she's like, how can the sun be a star? हाँ। I said, because, every sun of every solar system is a star. हम्म। And her question was, but don't people become stars when they die? और ये उसको हमने बताया है. जी। So I did not want to counter that teaching. So I said, yes, people do become stars when they die. हम्म। And when you're like, so when I die, I will become a sun and give light to an entire solar system? That is so वाओ। cool. That is so amazing. And I was like, oh crap, ये क्या हो गया? आपने ऐसे कभी नहीं सोचा होगा, मैं अभी ये सोच रही हूँ, नहीं मेरे मैं दिमाग में कभी क्यों नहीं आया। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था. वाओ, ब्यूटीफुल। बट ये पहली बार नहीं है जो उसने चुप कराया है मुझे. Now, हम्म। obviously, like I said, my genre is military arts and military action and martial arts. जी। तो उसने एक बार मुझे बोल दिया, tell me a bedtime story. हम्म। So I said, all right, I'll tell you a story. So I said, which story do you want? जी। Obviously, मैं उसको अपने लिखे हुए, she's too young for those stories. So हम्म। I said, you tell me. So she said, I want Snow White, हम्म। but I don't want Snow White the way I've read it. I want your अच्छा। version of Snow White. तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, आई एम द राइटर. हम्म। तो मैंने स्नो वाइट की स्टोरी बना दी. आई क्रिएटेड अ मिलिट्री सेटिंग ऑफ स्नो वाइट एंड ऑल द सेवन ड्वार्फ्स वर द सेवन जनरल्स ऑफ हर आर्मी. हम्म। और बैटल स्ट्रेटजीज हो गई, एक अटैक हो गया, और जी। एक फुल फ्लेजेड वॉर हो गया. एंड स्नो वाइट इवेंचुअली वन द वॉर एंड became the queen. हम्म। And then she ruled her subjects. At the हम्म। end of the story, she looks at me and she says, you know what? Don't ever tell me stories anymore. और वहां पे इतना रियलिटी हम्म। चेक हो गया. बोला यार, आई एम सपोज टू बी अ राइटर, और ये 5 साल की बच्ची मुझे बोल रही है डोंट टेल मी स्टोरीज एनीमोर. इट वाज फनी. दिस इज एवोल्यूशन। Yeah, evolution, and it's a good reality check. हाँ। Not everything is for everybody. That's Darwin's theory of evolution, survival of the fittest. हाँ। एंड ये तो जैसे स्टोरी वाला तो एक बहुत ही अगेन बड़ा एग्जाम्पल हो गया, उन्होंने तो बहुत छोटी सी जो स्टार वाली बात से ना, मतलब कितना अच्छे से, कितना प्यार से उन्होंने ये चीज बोल दी, she'll be giving light to all these planets. Wow. Yeah, and that is a nice way of looking at it. Huh. All love to her. I guess I can frame a very relevant question out of this. Since you're fathering a daughter, what exactly do you want her to understand about your perspective as a man who wants to hear the women voice amplified? Firstly, you need to listen. When you're listening, you are Hmm. learning. If you're talking, you're not listening. And if you're not listening, you're not learning. So you need to listen, and listen to understand, not to respond.
जी। आजकल क्या हो जाता है, वी लिसन टू रिस्पॉन्ड। किसी हम्म। ने कुछ बोल दिया उसको जवाब देना है, कि किसी ने कुछ बोल दिया उसको सुन लो, समझ लो, जवाब बिल्कुल। देना जरूरी नहीं होता। हम्म। So that is one. Second, do whatever you want. Just don't give up. Take it to the finish. जो भी करना हो. हम्म। Whether you want to be a rocket scientist or whether you want to be working, in the fields, no job is too small. No job should be left incomplete. Finish it. The other day I was in words with another author और वहां पे हम ये बात कर रहे थे कि आजकल सभी लोग बहुत फ्रैक्शनल हो गए हैं, पेशेंस नहीं रहा है। तो ये जैसे अभी आपने बोला कि जो शुरू किया है, whatever you have started, take it to the finish, तो ये चीज लगभग खत्म हो रही है। रीजन इसका कुछ भी हो, XYZ, लैक ऑफ पेशेंस हो, लैक ऑफ फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, एक काम में मन ना लगना हो। See, and again, this is my opinion. हम्म। It is the absence of a discipline. ओके। Discipline could be anything. हम्म। Abhi, discipline in our history, in our ancient texts and all of that हम्म। is, going to a gurukul and picking up a skill and mastering it. जी। The same thing in Chinese philosophy. Discipline is just another word for kung fu, हम्म। where you keep doing something over and over and over again till you become good at it. जी। वो कुछ भी हो सकता है. हम्म। As a child, you could learn playing field hockey, हम्म। but you give it up. You should never give it up. You could be good at field hockey. You could play for the country. You could play at the Olympics, हम्म। or you could just be good at dribbling the ball. You keep dribbling the ball. जी। Don't stop. The end goal is not important. जो आप सीखते हो उसमें जो वो discipline आपकी हो जाती है, the way it calms you down is very important. Martial arts or yoga. I've been practicing martial arts for the last, I don't know, 35 years now. And the discipline that it has got into me हम्म। is amazing. When I look at things that I can do now हम्म। in martial arts skill sets as compared to what I could do when I had just started off, हम्म। they are way different. That journey itself is amazing. और वो हम सोचते नहीं है. For example, since we are talking about martial arts, हम्म। मैंने martial arts शुरू कर दिया. I want to be Bruce Lee. You don't become Bruce Lee overnight. बिल्कुल। Virat Kohli, I mean, he's gone through a lot of practice, ups, downs, and he's become Virat Kohli. He's not born as Virat Kohli. जी। He had the patience to go through it. बात वही है, you pick up something and you stick to it till the finish. कभी ना कभी उसका एक अच्छा रिजल्ट आ ही जाएगा. You बिल्कुल। don't need the result today, you don't need the result tomorrow, and you don't even need to think about the result. You just need to keep doing your best. ब्यूटिफुली सेड। अमेजिंग। और यही चीज हमारे हमारे होली बुक्स में भी लिखे हैं. भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म किया जा फल की इच्छा मत कर. That's how simple it is. ट्रू। ओके। सो a lot of talking around the books, around the work, around the characters. I would really love to know about the reviews that would be pouring in. Do you think that the readers, they have been able to understand your look about, and also maybe they have seconded with it? There are a few, yes, and there are several who might have connected and Hmm. have not said anything about it, because that is how we are. We don't write positive reviews. We are very quick to write negative reviews, and it's okay. मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही है, and it's important. Negative reviews आना बहुत जरूरी है. Hmm. You know where you're failing, and you know that if that is an area you want to work on or not. Hmm. So reviews secondary है. Hmm. People understanding, people relating, like I said, somebody connects with one line and that one line inspires one person. Your job is done. जी. One concluding question. What would be that bonus statement that would go from you as a father, as a husband, as a son, and as an author to the listeners and the readers? Okay, one statement encompassing all these. Hmm. Listen to everyone around you. Do what you are good at. People say that you need to work on your weaknesses and all of that. I somewhere don't agree.
your weaknesses are part of you. Your Hmm. strengths are a part of you as your person. You work on your strengths. क्योंकि weakness तो हर किसी में होता है. Strength भी हर किसी में होता है. वो strength को आप showcase करो, उसको build करो. And eventually, you just need to focus on the good. Like मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी. Be nice in the way you treat others, be respectful. बचपन में एक किताब पढ़ी थी मैंने, कॉमिक बुक बैम्बी. इट्स अ वॉल्ट डिज्नी कॉमिक. 40s की कॉमिक है वो. एंड माय मदर, obviously, they grew up, we all grew up middle class, so they did not have access to a lot of things वो time पे in the 80s. So there was this book vendor who used to enter the local trains in Bombay, and she would pick up these comic books. वो 1 रुपए में 4 मिलते थे. Okay. And she used to bring those comic books for me. और मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने के लिए. That's where the germ got set in. So Bambi was one of the comics that I had read. और उसमें there's this character Thumper who is a rabbit. And Thumper says in the typical Walt Disney style, if you can't say something nice, don't say nothing at all. So that is the summation. If you can't say anything nice, don't say anything. It's not important. Wow. Recently, Thumper got viral. बहुत मीम्स आए थे, बहुत रील्स आए थे. अच्छा? हाँ, I didn't know that. मैंने देखा ही नहीं है. अभी लाइक लास्ट ईयर 2024 में Oh, बहुत. okay. हाँ, उनका जो वही अगेन द सिग्नेचर स्टाइल, तो वो बहुत फेमस हुआ था. बट जो एक्चुअल जिसे कहते हैं ना निचोड़ किसी बात का, दिस इज व्हाट थम्पर एक्चुअली वांटेड टू कन्वे. आपने एक स्टेटमेंट में उसको बताया, एंड आई रियली विश के सब सुने इसको. It is really important that if you can say something nice, say it. Otherwise, stay shut. There's no need to say anything. कोई जरूरत नहीं है. I mean, saying something bad to someone is not really going to work wonders. Actually. आपकी भड़ास निकल जाएगी. Hmm. वो आपको भड़ास ही निकालने आए तो आप लिख लो. You never know. You might just end up writing a bestseller someday. बिल्कुल. Don't say it to anyone. बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोल दी दोबारा के बेस्ट सेलर हो जाएगी, भड़ास निकाल लो. हाँ हाँ निकाल लो किताब पे. On paper, put it down. I think everyone should read Bambi. It's a very good comic book. Characters भी इतने अच्छे हैं. Bambi, Pauline, Thumper, Flower, and situation जो है उन लोगों की बहुत अच्छी है. ब्यूटीफुल. बहुत कम ऐसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं जो ना खत्म हो, कोई ना कोई टॉपिक होता रहे, एंड वी जस्ट कीप ऑन exchanging words. This is one of them. Thank you very, very, very much, sir. Thank you very It was a much. genuine pleasure. Thank you for having me on the podcast. It was my pleasure. I'm really thankful, really grateful. Also because you were so patient, so bearing. Thank you for that. And amazing conversation it was. All the very best with the books. Best wishes. Thank you so much.